Bihar. I'll give a brief overview of our institute. In between that, you will get the gist of what are the millet products can be produced and all. And if time permits, at the last, I have a presentation in which you can see the different processing technologies, if the time permits. So actually, millets in Bihar, it is cultivated only at 0.34% only of the total millet cultivation in India. In India, it is around 16 million hectares. Major portion is pearl millet. So the major areas are Munger, Patna, Bhagalpur, which are having potential. Actually, Bihar is a state which is having so much potential due to very fertile land, being an Indo-Gangetic plain, and good farmers are there, and there is a ever-growing demand. So lot of potential is there. Not that Bihar also few startups are there which are in our knowledge. For example, Millet Power, Millets of India are two startups which are in our institute's knowledge. So in our institute, what we do is that we do mainly research in development of new crop varieties which are high yielding hybrids varieties, and grains are processed. We have the technologies to process the grain, and whatever. By the way, the best forage crop in India is sorghum. What is sorghum? Followed by bajra. For that also we have developed varieties. So those are also processed as silage. Then you have fodder blocks, stover. So this is Indian Institute of Millet Research. It is housed at Hyderabad. So millets, almost you have around 8 to 9 types of millets. Pearl millet, sorghum, finger millet, foxtail millet, kodo, little millet, proso, and brown top millets are some of the millets. The major ones are pearl millet, sorghum, finger millet. So in 131 countries they are eaten, and this is the first plant to be domesticated for food purpose, and in Asia around 59 crore people feed on it. So to tell about our institute, it was started as PIRCOM, that is Project on Intensification of Regional Research on Cotton, Oilseed and Millets, in 1958. In the year 2015, it was upgraded as Indian Institute of Millet Research. You can see the chronology how the development has been. So our research is that we have main institute, Indian Institute of Millet Research at Hyderabad. It is supported by Center for Rabi Sorghum at Sholapur, that is exclusively for Rabi Sorghum. Rabi Sorghum is a premium sorghum which comes under residual moisture without any irrigation. Then you have one regional center. Recently, 27th of August 2023, foundation stone was laid at Kurmalali, Rajasthan. This will exclusively work on pearl millet. So this is under Prime Minister's initiative. A fund of 250 crores has been given to our institute. Out of that, we have carved and we have started establishment of this regional center. This is near Barmer. So under this institute, 3 crops are there. These are major millets: sorghum, pearl millet, small millets. We have coordinated projects. We support the state agriculture universities to do coordinated research for development of new varieties and hybrids of sorghum, pearl millet, and small millet. If you see the millet scenario, Green Revolution started somewhere in 1970. Before that, 20% of the food what we eat was millets. But now it is only 6%. There is sharp decline. Though the area has been compromised to cotton and other crops, the productivity has not decreased. So sharp decline in the area of millets has been observed. So from 20% to 6% now it is being used in diet purpose. Though the area declined, the productivity increased from 11.3 to 16.3%, which is attributed to high yielding varieties, improved management practices. So this is the sorghum world scenario. In all over the world, sorghum is produced in 41.9 million hectares. Total is around 78.4 million hectares. If you come to see the scenario in India, it is cultivated under just 12.6 million hectares, of which major is bajra. So these are some of our credentials of our institute, what we have developed around 19 hybrids,
20 varieties. We have developed around 22 tech cultivars. Around 67 millet foods have been, technologies have been developed and transferred. So we produce sufficient seed for all the state governments and all. Around 2,300 students have been trained. Around 5,500 farmers have been trained by us. Two of the main technologies is CHS24MF. This is a fodder variety. Around 10% of the area under India is under forage is under this. This is a 100 crore plant. Single variety is a 100 crore plant. Then the second one is CHS16. It yields almost like rice 6 to 8 tons per hectare under paddy fallow conditions. So Bihar, Odisha, wherever paddy fallow is there, we are trying to promote it. Odisha has come forward, Chhattisgarh has come forward. Still now Bihar, we have not been able to forge a partnership with them. So they can also participate in millet mission. Odisha millet mission has been extremely successful. So these are the mandates of our institute. I will quickly go through so that we can see the other video. So these are the different areas in which we work: crop improvement, production, protection, socio-economics and value addition, business incubation and coordination. So our main technologies are new cultivars, hybrids, advanced agronomic practices and protections, and millet value-added products which you are interested on. So these are the crops which we work. So millets are the crops which are grown in most ground floor area with minimum irrigation or no irrigation. So here we work on development of drought resistant varieties which use minimum water. And we are also interested in developing end user specific. We develop specific varieties of sorghum for biscuit making, specific varieties for fodder purpose. So we breed specially for that one. So we produce sufficient seed for the country. We have produced around 7,823 quintals of seeds and supplied to different governments. So of this 24 MF and CHS16 are our major trump cards. We have state-of-art technologies for doing R&D purpose, and we are also going to establish one state-of-art analytical lab under Prime Minister the 250 crore initiative what I was saying. So these are the different activities. Our major aim is अभी तो अब तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो गया है, अब तो समोसा भी बेचने लगे हैं। एक और बात बता दूं, दुनिया का कोई चीज इसमें खराब नहीं होता है कि मतलब समोसा बेचना कोई खराब काम नहीं है। लोग कहें समोसा बेचता है, अरे समोसा बेच करके तो यहाँ किंग हो जाएगा, यहाँ भुजिया बेच करके तो भुजिया वाला हो गया सर। आप देखिएगा भुजिया वाला, हल्दीराम भुजिया वाला कहाँ पहुंच गया, अमेरिका में उनकी तूती बोलती है। तो ये भी नहीं समझने की जरूरत है कि कोई चीज छोटा है या बड़ा है, या लोग रोटी बेच रहे हैं। यहाँ पर कई फैक्ट्रीज हैं जो कि रोटी, सिर्फ रोटी को सेमी बेक्ड रोटी करके बेचते हैं या इवन बेक्ड रोटी करके बेचते हैं। चावल को आजकल, भात को आप अगर कोई प्लेन में गए होइएगा तो भात बिकता है वहां पर बना हुआ, सिर्फ उसमें गर्म पानी डाल देता है, 8 मिनट छोड़ देता है, उसका कहता है 8 मिनट के बाद आप इसको खा लीजिए। तो ये सेमी प्रोसेस्ड फूड, सेमी कुक्ड फूड, ये भी बहुत ज्यादा बिकता है। अगर हनी बेचना हो, हनी यहाँ पर हनी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग हनी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ क्रॉसिंग नहीं होती। ये क्रॉसिंग होती है जाके पंजाब में, यही क्रॉसिंग होती है उत्तराखंड में, और वहां से इसका एक्सपोर्ट हो रहा है।
तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हनी की प्रोसेसिंग। तो मैं इससे ये कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि ये जितने बच्चे हैं या जितने लोग हैं, यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हम लोगों ने महसूस किया, मैं AIC बिहार विद्यापीठ से हूँ, अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि नीति आयोग ने एस्टैब्लिश किया है, सिर्फ इसी काम के लिए कि हम एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप को मदद करें, उनको भी जो भी दिक्कत होती है उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। और उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें रियलाइज की। जैसे एक चीज़ कमी है यहाँ पर कि यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है ये हमको नहीं मालूम है। मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा और ये जानना चाहिए हम लोगों को। जब भी हम लोग कोई एंटरप्रेन्योर डिज़ाइन हम लोग के यहाँ ये आता है तो छोटी चीज़ मैं बताता हूँ। कोई भी सामान, हमारे यहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन होता क्या है हम लोग का, जैसे हम अगर बनाने जाएंगे लड्डू, सिर्फ यहाँ का लड्डू भी, यहाँ का पिड़ुकिया, यहाँ का खजूर, यहाँ का जो होता है ठकुआ, ये सब दुनिया में जा सकता है। अंतर क्या होता है कि हम सब चीज को एक साथ बेचेंगे तो नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा उसको। ठकुआ बेचिएगा तो कितना चीनी डालिएगा, कितना गुड़ डालिएगा, या गुड़ वाला बेचिएगा कि चीनी वाला बेचिएगा, कितना उसमें कितना फ्राई कीजिएगा, ये सारे इश्यूज को आपको शायद सेटल करना होगा, पहले स्टैंडर्डाइज करना होगा। स्टैंडर्डाइज करके उसकी टेस्टिंग होती है, तो यहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था बहुत प्रॉपर नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। तो अभी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हो जाइए तो आपको मैं मतलब परिचय करा दूँ। ये इन्होंने एक टेस्टिंग का लैब खोला है हमारे साथ, कॉग्नोजमेट। ये अजय जी अपने ही बायो मेडिकल साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छा उनका अपना पेटेंटेड आइटम्स भी हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने AIC के साथ मिल करके एक फूड प्रोसेसिंग लैब भी बनाया है, तो अगर किसी को कोई ज़रूरत हो तो शायद इनकी मदद ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप था हम लोगों का, तो ये अगर, क्योंकि आपको प्रत्येक में देखिएगा, प्रत्येक पैकेट के पीछे एक कंपोजिशन लिखा रहता है, वो बिना कंपोजिशन लिखे हुए आप नहीं ले जा सकते हैं बाजार में, वो कंपोजिशन यही लिखते हैं।